Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, students. Just a couple of minutes. Yes. Now I can see students joining in. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Uh, right. Right. Some questions with respect to registration, same topic of registration which we are discussing. Nilesh's question is, sir, if proprietor has made purchase during the period of registration and he would wish to avail ITC on those purchases, can he able to take benefit of ITC by providing URL? So if he's made purchases during the period of registration, but he's not registered, yes, he can claim the credit. So he can tell the supplier that my details shall be provided once I receive the registration certificate. That is definitely possible. Yes. Okay. So we had discussed in the last session on the registrations, basically various types of registration. So we'll proceed further today on what will be the effective date of registration. This also we had touched upon that if you apply for the registration in a timely manner, that is, if you apply within 30 days from the day when you became liable for registration, then the effective date of registration will be the date on which you became liable. So if you became liable, like we had taken some example, right? You had become liable on the 1st of January. That is when your limit had crossed. Now you need to apply within 30 days. If you have applied on time and the officer takes time to give registration, till even in that case, your effective date of registration will be the date when you became liable. And but if you apply later on, then it will not become from the date when you became liable. It will be effective from the date when the registration is granted. So let's take that example, right? Like the example we had taken of you are liable for registration from 1st of January. Okay. You had applied for registration on the 29th of January, right? Because your liability of 20 lakhs crossed on 1st January, now you have applied within 30 days, correct? Within 30 days, you have a time limit to apply. You have applied by the 29th January. Now, since you have applied on the time and the officer has, say, given you the registration after the 29th, he will not give you immediately. Say, he's given you on the 15th of February. So, your effective date will not be 15th of February. That is when he is granting the registration. In the registration certificate, you have a mention of the effective date. That effective date will be 1st of January because you have applied within the time limit of 30 days. So effective date of registration will be the 1st of January, right? Then a case where you have applied late, you should have applied by 30th January, you applied say on 1st of February. You have delayed by 2 days. So you will not get the registration effective from 1st January. आपका registration मिलेगा 15 February से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका लायबिलिटी जब से बनता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप उस दिन से 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा जिस डेट से आप लायबल थे. ठीक है. और अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट होगा जब ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है तब से.
इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10, हाँ वो ही बता रहे हैं निधि आपको। अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो फिर आप स्टडी मटेरियल का रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, हम वहां पे चले जाएंगे, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल का ही कंडेंस फॉर्म है। तो आपको अगर स्टडी मटेरियल में कंफर्टेबल है तो आप बता दीजिए कि कौन से पेज पे आपको दिक्कत आ रही है, हम उसका डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट, आफ्टर 30 डेज में आईटीसी क्लेम होगी। जो पुराने डेट का क्रेडिट होगा एंड जो आपने परचेज कर लिया है और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उस पीरियड का जो गैप रहेगा उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट। सो द आईटीसी का भी यहाँ पे रेलेवेंस है, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन चौहान, कि आपको उस पीरियड का क्रेडिट नहीं मिलेगा जिस पीरियड पे आप रजिस्टर्ड नहीं थे। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देते विद इन टाइम तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पहले, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने का पहले का भी पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट तो पहले से होगा। ठीक है। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काफी मायने रखता है रजिस्ट्रेशन के लिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी। सो विद इन टाइम में 31 जनवरी से क्रेडिट मिलेगा और आफ्टर टाइम में 15 फरवरी। करेक्ट, दैट्स द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। इन मॉड्यूल 9.53 एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, 9.53। राइट। ओके, इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10 जो बताता है वेयर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड, a certificate of registration duly signed or verified through EVC, electronic verification code, by the proper officer in form GST REG 06। तो क्या बोल रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हो गया है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा विच विल बी इन फॉर्म REG 06। उसमें क्या रहेगा, पीपीओबी और एपीओबी। पीपीओबी का मतलब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एपीओबी का नंबर है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। This will be made available to the applicant on the common portal, and a goods and service tax identification number, that is GST registration number, is communicated to the applicant within 3 days from the grant of registration। मतलब जो आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए REG 1 में, उसको चेक करके ऑफिसर जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा REG 06 में। ठीक है। जो REG 06 से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और जो GSTN फॉर्मेट रहेगा वो कैसे रहेगा, 15 डिजिट का रहेगा। फर्स्ट 2 डिजिट जो है स्टेट कोड रहेगा, बाकी 10 डिजिट आपके पैन नंबर रहेंगे। बाकी और दो एंटिटी का कोड रहेगा, जैसे आपके पास एक ही एंटिटी है तो 01 रहेगा, दो एंटिटी है मतलब दो ब्रांचेस है तो 02 रहेगा। एक स्टेट में, स्टेट वाइज आपके कितने एंटिटीज है उसके कोड आ जाएंगे। फिर चेक सम कैरेक्टर, ये यूनिक कोड रहेंगे जो गवर्नमेंट आपको देंगी। तो ये रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के डिटेल्स एंटर किए जाएंगे। ओके। और आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जीएसटी आपके नेम बोर्ड में डिस्प्ले करना है, और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने डिस्कस कर ही लिया है। क्लियर है निधि?
Ishan's question is, but ITC would only be available from the date immediately preceding the date became liable for registration. That is in respect of stock. In case of stock, right? That we had discussed in terms of stock in the ITC chapter. Here we are talking about purchases which have been made and those which have purchased after the date when you became liable for registration. That stock, will you get the credit is the question. That purchases. Yeah, good afternoon, Ms. Priya. Sir, can you show us the registration form if possible? Sure, I can show you a sample registration form. Give me one moment. Of course, this has no resemblance of uh, thing of anything, but this is only just to show you how does the registration certificate look. Mm. Nothing to copy it because this is client sensitive information, but since you need it, I'm just sharing this with you. So once we apply for the registration, we apply for the registration in which form? In REG 01, right? After officer is satisfied, he will give you a registration certificate, which is called as registration certificate. The format which is prescribed is there in form GST REG 06. Okay, so this is there in the REG 06 format across any state in India, wherever you register, you will get the registration certificate in this format itself. So it is REG 06. Okay. And this is called as registration certificate. You will get the registration number mentioned here. So this is your registration number. First two digits is the state code. 29 is the state code. For each state, you will have a separate state code. Then you will have 10 digits PAN number. BGVPR 05741G, and this person has one unit here, so it is numbered one, and ZP is a unique code. So this is how the registration number is generated. First two is the state code, then 10 is the PAN number, followed by entity, number of entities which have registered, and then the unique code. Okay, this is the number you will get in the registration certificate, the legal name and the trade name. That is, what is the name appearing in your PAN will appear as the legal name. Trade name will be the name which you give saying that this is your trade name. Like this person has a trade name called MS, so his name is appearing as trade name separately. Then the constitution of business, what it is it a proprietorship, partnership, firm, company, LLP? That will appear. Then the address of principal place of the business, date of liability and period of liability. So here in this case, both it is same. So date of liability and period of liability is 22nd January. So when did he get the registration certificate? He had got the issued it on 22nd, right? And the period of validity is also on 22nd because this is a voluntary registration. Type of registration is regular, not compulsory registration. Particulars of the approving authority, center authority, the name of the officer and other details. Then you have in the next sheet, if any additional place of business is there. So PPOB, what we say, principal place of business will appear in the first sheet, and in the second sheet, any additional place of business. So what is the implication of this? That आपका कुछ भी address है, which is a branch, और आपको एक ही registration चाहिए, then that mention will be mentioned in the additional place of business. And then the signatories details. What is the, if in case it's a proprietor, what is his name, his designation, and resident of the state. So this is how the registration certificate appears. Any doubts, Soumya, on this?
For Delhi, 07 is the state code. Yes. And 09 is for UP. Very true. Trade name is unique for particular registration number and we can have multiple trade. Yes, we can have multiple trade names. So it is not kind of bounded. Sir, so ITC will be available for the purchase done between the period from the day became liable till the grant of registration. Correct. You're right. What if someone adds on branches year on year? So you have to do an amendment. So once you have one branch, now if this person has any additional place of business, he has to apply for amendment and get that added in the registration certificate. PO can do physical verification of PPOP and EFTP. Yes, he can do the physical verification of principal place of business and additional place of business. In voluntary registration, as we had seen, in case of voluntary registration, from the date when the registration is granted, from that day he can claim the ITC. Okay. So can we alter or edit the trade name later after we get the registration certificate? Yes, if your trade name is changed, then you need to have a proof for this and certifying that yes, you're the same proprietor and your trade is getting changed, then you can amend the trade also. So it will be approved by the officer. I mean, it is going to the approval of officer. If he approves, it can get changed. Okay, so we'll take up the question, which is question number 20 and 21 to understand the registration date in a much detailed manner. निधि जी आप भी बता सकते हैं that you can unmute at any point of time if you have any doubts क्योंकि आपका specific कुछ doubt है तो आप please बता दीजिए. Sugam Enterprises. Sugam Services Limited is engaged in taxable supply of services in Madhya Pradesh. He's engaged in taxable supply of services in the state of Madhya Pradesh. The turnover of Sugam Services Limited exceeded 20 lakhs on the 1st of November. The turnover exceeds 20 lakhs on the 1st of November. मतलब 20 lakhs cross कब हुआ? 1st November. So he's liable for registration from the 1st of November. It is liable to get registration by 1st of December. Correct? तो लाइबिलिटी क्रॉस हुआ है 1st नवंबर 30 days विल बी 1st of December क्योंकि 1st नवंबर को छोड़ देंगे बाकी 29 days and 1st December will make it 30 days in the state of Madhya Pradesh. It applies for registration on 28th November and is granted registration certificate on the 5th of December. So effective date क्या होगा? Since he has applied on time, it will be 1st of November. Now, in the same example, if Sugam Services applies for the registration on the 3rd of December and is granted registration certificate on 10th of December, the effective date will be 10th December, not the 3rd December, because he's applied after 30 days, तो फिर उसको backdated registration नहीं मिलेगा. He will get the backdated registration only when he applies within 30 days time limit. Sir, will there be any change in procedure for casual taxable person? There is a change in procedure. We will go through that separately. So in this first case, he can claim. In the second case, yes, he can claim from 10th of December. Yes, he can claim ITC only from the 10th of December, not prior to that. But of course, stock के लिए हमने पढ़ा ना ITC में. For the stock, what is lying as on the date prior to 10th December, that is 9th December का जो भी stock है, that he can claim. Stock, right? So there are two things. Whatever purchases I make, that is separate. For the first case, I can claim it from the 1st of December, from the 1st of November. And in the second case, I can claim it from the 1st of 10th of December. That is purchases what I'm making. But for the stock, whatever the stock lying on the 31st of October, that I can claim in first case. And in the second case, I can claim whatever is the stock as on 9th of December. So sir, जब से effective date of registration तो होगा तब से ITC मिलेगा. Correct. तब से ITC जो भी purchase करे उसका मिलेगा.
उसके एक दिन पहले का जो है स्टॉक, उसके कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो वो भी मिल सकता है। क्लियर है निधि विश्वकर्मा? क्या क्वेश्चन है निधि जी? आप अनम्यूट करके पूछेंगे थोड़ा। यही पूछना सर कि जो मतलब क्रॉस हो रहा है, टर्नओवर जो क्रॉस हो रहा है वो 1 नवंबर को हो रहा है, तो उसके से 30 डेज बाद जो हम काउंट कर रहे हैं वो नहीं समझ में आया, मतलब कि कब से कब काउंट करेंगे कि हमें पता चलेगा कि वो इफेक्टिव डेट है या नहीं, बस यही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इनका टर्नओवर, इनका रजिस्ट्रेशन कब से करना पड़ेगा सुगम सर्विसेज को? चलो 1 नवंबर। 1 नवंबर को 20 लाख क्रॉस हुआ है, तो उनको जी फर्स्ट सर। नवंबर से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जी करेक्ट। सर। तो गवर्नमेंट बोलता है आप 1 नवंबर के 1 नवंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए हम आपको कुछ टाइम देंगे। कितने दिन का टाइम दे रही है? 30 डेज के लिए। करेक्ट, 30 डेज के लिए टाइम दे रही है कि आप 30 डेज के लिए के अंदर अप्लाई कर लो। ठीक है। यस सर। तो 1 नवंबर से आप 30 डेज गिनोगे तो 30 दिन कब फॉल होता है? सर फर्स्ट को छोड़ देंगे तो 1 दिसंबर हो जाएगा। करेक्ट, 1 दिसंबर। जी सर। बिल्कुल सही। तो जी सर। 1 दिसंबर के अंदर उनको अप्लाई करना है। ठीक है। जी सर। अभी 20वें क्वेश्चन में लिखा गया कि इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द 28 नवंबर। ठीक है। यस सर। आपने कहा कि फर्स्ट मतलब दिसंबर वो के। टाइम टाइम के पहले कर दिए, वन करेक्ट। दिसंबर से। करेक्ट। जी। तो उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी चेक करके देगा ना, या इमीडिएटली दे देगा यस अप्लाई सर। करके? वो भी चेक करेगा। नहीं नहीं तो सर। उस जी सर। चेक करके 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। जी सर। ठीक है। तो फिर उसका यस सर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? 8 नवंबर होगा नवंबर, 1 नवंबर। उसने सर। अप्लाई किया 28 अच्छा। नवंबर को, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन जी जी। इफेक्टिव डेट होगा 1 नवंबर को। क्यों? जी सर। सर 1 नवंबर इसलिए होगा क्योंकि वो समय के विद इन मतलब अंदर में रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसीलिए। करेक्ट। करेक्ट। तो उसने समय के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसीलिए उसका 1 नवंबर का हो जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके सर, क्लियर सर। और सेकेंड केस में बताया गया है कि उसने रजिस्ट्रेशन कब तक करना था? 3 दिसंबर तक। नहीं नहीं, फर्स्ट केस में पूरे फैक्ट्स करेक्ट है कि उसका लायबिलिटी 1 नवंबर को क्रॉस हो गया है, तो उसको कब तक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहिए था, कौन से डेट तक? सर 3 से तो जनवरी। क्या हो गया? नहीं नहीं, इन द अबव एग्जाम्पल, मतलब पूरे अच्छा एग्जाम्पल को अच्छा। देखेंगे। जी सर। ही इज एक्सीडेड 20 लाख ऑन कौन से डेट? सर 20 लाख ये 1 नवंबर। 1 नवंबर को एक्सीड किया, तो अप्लाई कब तक करना था? सर 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर याद रखिए। तो फर्स्ट जी दिसंबर सर। तक अप्लाई करना था, लेकिन सुगम सर्विसेज लिमिटेड ने अप्लाई कब किया? 3 दिसंबर को मतलब क्रॉस थर्ड। हो गया। करेक्ट।
सो 3 दिसंबर को किया, 30 दिन क्रॉस हो गए, और जी उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर चेक वगैरह करके 7वें दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, विच इज 10th of December। 10 जी सर। तो तो यहाँ पे इस एग्जांपल में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर हो जाएगा। सही है, करेक्ट। ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Purchases ITC can be claimed from 1st December in from 10th December in the second case. Correct. So how will be eligible for ITC when you have not yet received GST number? In the first case, we have not received the GST number when we purchased, but we will have to tell the supplier that I have applied for registration. So he will, if he has to file the returns, he will already file. If he has time to file the returns, like some taxpayers are monthly taxpayers, some are quarterly taxpayers. So if they are monthly, then they will already file the returns. And when they file the returns, they will provide your details as what? They will provide your details as unregistered. Because when they had supplied to you on that day, you did not have the registration certificate. So they will treat you as unregistered and they will supply it to you. Now, once you give the registration number, then they can amend that unregistered category to registered category. Because if we just tell we are registered, it is not sufficient. We have to give our GST identification number as well. So, as on the date of buying, you do not have the registration certificate. So they will categorize you as unregistered. And once you obtain the registration certificate and give them the number, they can amend the details in the GSTR1 and they can pass on the ITC to you. Clear? So we are through with the effective date of registration with the example as well. The GSTI number I had explained. Now, what is a casual taxable person and a non-resident taxable person? Once registration taken, a person cannot voluntarily move out even if his turnover becomes below registration, below threshold after registration, except by way of cancellation. Correct. So if he has to move out, he has to apply for cancellation. If his registration gets cancelled, then he should not charge GST. Right. Now, who is a CTP and NRTP? We will call it as CTP because that is the general terminology which is used. So, like how you have permanent account number. When anybody asks you, give me a document, they will ask for PAN or permanent account number. They will always call as PAN only. So, what is PAN? PAN is permanent account number. Similar to that, CTP refers to casual taxable person and NRTP refers to non-resident taxable person. Okay. Who is CTP? A person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services. As the word suggests, which is highlighted here, a person who not regularly, because if he's doing it regularly, तो फिर he will have a shop, he will have a fixed establishment, he can register there. But he is not doing it regularly, he is doing it occasionally. Occasionally करने वाला है ये. So this is very important that he is doing this transaction occasionally. Okay. Occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business. Okay. Where when he's doing it in the course or furtherance of business
whether as a principal agent or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. That is, he will do it in a state or a union territory where he is not having a fixed place of business. There, if he wants to register, he will do a casual taxable person registration. तो सीटीपी रजिस्ट्रेशन कब लेंगे? जब आप किसी और शहर में जा रहे हो और वहां पे टेम्पररी ओकेशनल बिजनेस कर रहे हो, तब आप सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है। और एनआरटीपी क्या है? एनआरटीपी सीटीपी की तरह ही है, बट डिफरेंस है कि सीटीपी एक सिटीजन है, एक बंदा है जो एक प्लेस में रहता है, लेकिन एनआरटीपी जो है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ही इज नॉट हैविंग अ फिक्स प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया और ही इज नॉट हैविंग अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिरंगी है, फिरंगी आके कर रहा है, सिंपल। ही इज अ एनआरटीपी। Casual taxable person is a person who is supplying goods and services has no fixed place of business. Correct. So there is a definition in your in our understanding terms. What you're saying, that is also right. Now, what is the difference between CTP and NRTP? I have made up a chart. I'm not sure if you can find this in your study material, but this document I will share it with you. उसमें आप इसको use कर सकते हो, right? So this will give you a kind of glimpse of what is CTP and RTP even for your exams. A CTP has no fixed place of business in a state or union territory. Yes, this we know that he is not having a fixed place of business in a state or union territory. No fixed place of business in a state or union territory from where he wants to undertake supply. NRTP has no fixed place of business or residence in India. He might be registered in any other state where he undertakes supplies. He may be registered in any other state, not in that state where he wants to supply, because if he would be having a registration already in that state, he will not take a CTP registration. And NRTP is not registered in any other state at all. A CTP needs to register in every state from where he wants to do business. He will do a registration in every state from where he wants to do business. Similarly, NRTP will have to do registration in that state from where he seeks to supply. In case of CTP, PAN is compulsory because without PAN, you will not get your GST registration. Similarly, a casual taxable person registration also, you will not get it. For a NRTP, he will not have a PAN because PAN is for citizens of India. NRTP is a non-resident. He is not a citizen of India. So for him, passport is necessary if he is an individual. For a business entity, they will not have passport. For them, tax identification number is required. So for them, tax identification number is necessary. Normal registration process, how we do REG registration. Similarly, for a CTP also, we have to apply through REG 01. Excuse me. For a NRTP, there is a special process which is through REG 09. So this is the difference. REG 01 for CTP and REG 05 for 09 for NRTP. CTP is duly verified by the registered person. In case of NRTP, duly signed or verified through a EDC by his authorized signatory. So NRTP should appoint a person in India for the purpose of authorization because he will be the person who will authorize the details of the NRTP. So GST REG 9 registration certificate should be verified by a authorized signatory who shall be a person resident in India having a valid PAN. So he has to find some person and make him a authorized signatory. The common points for both of them is they cannot opt to pay tax under composition levy. Okay. They cannot pay tax under the composition levy. They have to pay tax under the regular scheme itself. Both casual taxable person and NRTP, their turnover can be below the limit. Still, they cannot take the benefit of a composition levy. Right? Then there is no centralized scheme. You cannot get a centralized registration scheme. एक registration है for everywhere I will use it, not possible. Threshold limit does not apply.
right? For a CTP and NRTP, we don't have to see the limits of 20 lakhs, 40 lakhs, 10 lakhs. If you're doing a CTP and NRTP, you have to take registration from rupee 1, except if you're a casual taxable person in notified handicrafts and craftsmen's goods. Only in such cases, you have to wait for the threshold limit, but otherwise, everything else, you have to take the registration immediately. At the time of registration, you have to make an advance deposit because the CTPs and NRTP registration is a short-term registration, and officers cannot know ascertain whether he's paid the taxes properly or no. So that's the reason they will have to pay the taxes first of the estimated tax liability in advance, and then they have to do the business. And both of these people have to apply 5 days before commencement of the business. Before commencement of the business, 5 days prior to that, they have to be available there. Their registration should be ready. Casual taxable person, yes, this is cleared. In short, CTP go other state and NRTP go to India from other country. Very nice. मीनिंग ऑफ सिग्नेटरी, सिग्नेटरी मतलब जो साइन करेगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कौन साइन करेगा उसे उसे कहते हैं सिग्नेटरी। और क्राफ्ट्समैन गुड्स मतलब जो गुड्स एक क्राफ्ट्समैन बनाता है, जैसे एक लिस्ट दिया गया है आपके मटेरियल में, लेदर गुड्स, वुडन क्राफ्टिंग, उसे कहते हैं क्राफ्ट्समैन गुड्स। How is estimation made? So what will do is a casual taxable person saying that I will get this many value of goods and I estimate that 20% will be the sale. So he will give his estimation. Based on his estimation, if the officer is accepting it, then he will accept his offer and then tell pay of this much taxes. So it is a kind of estimation between the taxpayer and the officer. So if I have not applied for registration within 30 days, normal registration, then will I get ITC of closing stock preceding date of liability? No, you don't get it. If you have registered on time, only then you get it. If you have not registered on time, right, then you don't get the ITC of that stock. So is there bargaining happening? There might be happening CTP. In case of CTP, yes, officer may say, no, I know that your business is this, and I generally see that 50% is the value of the sales, what I've seen of the stock, what you're getting. So you can say it in, there is a same kind of bargaining. EVC matlab, EVC is electronic verification. How you do the verification is by getting a OTP on your mobile number. You will provide that OTP, then that will be accepted that you have authorized it. So that is called as a electronic verification process. Next, what is the validity of the registration? A normal registration does not have validity, but a CTP's and NRTP's registration is having a validity. Okay. So this validity will be there only for a CTP and NRTP registration. The period is the period what is specified in the registration application saying that you have gone for an exhibition and only for that. So
the officer will give you registration for 7 days, because exhibition, if the duration, it depends on each exhibition. Some may be a month or 2 months also. But in this case, if your period is specified and you are saying that I will come only for this exhibition, then for the duration of that exhibition, he will give you the registration certificate. Or if you're saying longer time, saying that no, my exhibition or I need a registration for a longer duration, officer will say maximum I can give you is for 90 days. So it will be effective for 90 days from the effective date of registration. That is, first he will give you for 90 days. At the end of the 90 days, if you want to have an extension, then he can extend for further 90 days. So, 90 plus 90. So, by default, first it will be 90 days, then add on another 90 days. So, for 180 days is what you can get your registration for, not beyond that. Just one more. Okay. So the registration period is 90 days plus 90 days. That is the maximum what you can get the registration for. Now we have understood normal registration, casual taxable registration, and non-resident taxable person registration. Now, in any of these registration certificate, if you want to make some amendment, right, then you can do a amendment. Now, how does this amendment works? There are two kind of fields. Okay. Uh, So there can be two kinds of registration which is possible. One is amendment in the core fields, and one is amendment in the non-core fields. Okay. Core field means a field which is a core to the registration, which is important. Jैसे name of the business, addition of share stakeholders, that is change in the directors, change in the authorized signatory, they are called as stakeholders. So any kind of addition of deletion of stakeholders, and any kind of alteration or addition of principal place of business or additional place of business. So what will happen in these cases? Is this change is acceptable? Yes, this is acceptable, but this will require the approval of the proper officer. So you will need a approval of the proper officer for all of this. Without the officer's approval, you cannot change it. Okay. But in case of non-core fields, all other fields are non-core fields. That is email ID, mobile number, and basically email ID and mobile number, and the PAN number anyways will be a change in core field. Basically email ID and mobile number, there you can make changes. You don't need officer's approval. You can directly go authenticated, give your OTP. This will get changed. So non-core fields are two, which is easier. Core fields are many, which needs the approval of the officer. Who will be those GST officers? So there is a jurisdiction, right? Like for each individual, based on the locality what you are staying, there will be an officer assigned, which will be called as proper officer. So it will go on the online portal to him. He will check it. He will check the documents and then provide a approval. So what is the process for amendment? Here it goes. If I have to explain you step by step that there is a change in PAN, then you have to apply for fresh registration, because GST is PAN based, and if any PAN changes happen, then that change will be a change in the registration. So you have to apply for fresh registration if there's a change in PAN. If there is no change in PAN, if there is any change of business, name of the business, address of the business, addition or deletion of the partners, etc., then you will apply through amendment form called REG 14. So it's called as Form REG 14.
It will go to the GST officer. If he's happy, he will issue it within 15 days. मतलब आपका amendment हो जाएगा 15 दिन के अंदर. If there is no kind of clarification, and then you will get fresh form REG 15, which is say that changes is amended. If no, he's not satisfied, then he will need a clarification. He will give a notice in REG 03. It will come to the applicant. He has to apply within 7 days. If any question comes regarding amendment, you will get a time of 7 days. 7 days के अंदर आपको reply करना है in REG 04. He is giving you REG 03. Reply in REG 04. It will go to the GST officer. If there is happy, then he will make the change. If he doesn't give response within 7 days time limit, then your change is automatically amended. Else he may reject it and he will give an order saying that why I am rejecting in form REG 05. Simple flowchart. तो ये होता है प्रोसेस अमेंडमेंट के लिए. अमेंडमेंट का मतलब है कि आपको कुछ करेक्शन करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें कुछ चेंजेस करना है, तब आपका एप्लीकेशन जो है डालना पड़ेगा कि मुझे ये चीजों में अमेंडमेंट करना है. ओके, एप्लीकेशन हो गया, फ्रेश एप्लीकेशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया. अभी चलते हैं कैंसलेशन पे. कुड यू प्लीज रिपीट अगेन गोल्टी अनिल, विच पार्ट गोल्टी? अमेंडमेंट पार्ट, ठीक है. Very simple amendment. Just see the chart. Tell me which point you did not understand. Because I will give you some time to read it. Yes, once you read it yourself, you will understand. लिए दिया गया है निधि, यहाँ पे भी 15 days ही है ना. अगर नो रिस्पॉन्स इस केस में, सो दिस इज ऑल्सो 15 days. ठीक है. Miss P's question, sir, for CTP and NRTP, if period is specified in registration certificate, then also it can be extended by 90 days. They can extend it. They can again do a approval online. They have a facility for asking for extension. Then they can, once it is extended, then that will get validated, or that valid period of 90 days will get extended to further 10 days, 20 days, or 90 days, whatever the officer agrees it. Regarding rejection, Goldie. Regarding rejection, what happens if you apply for amendment? He is asked you for questions, you have responded to the questions, and then he is saying that okay, he slept over it. He's not reacted. You have submitted your response within 7 days. It all get recorded online. Once you submit your response, he's not responded within 15 days, not 7 days, within 15 days. Then व्हाट हैपेंस, इट विल बी डीम्ड कि आपने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो करेक्ट है और आपका अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगा. योर अमेंडमेंट विल गेट अप्रूव्ड. और इफ ही रिजेक्ट्स इट saying that no, I'm not happy with it also, then he will reject it and he will give a order. This REG 05 is an order saying that I have rejected the application for amendment for the following reasons. The general reasons will be the documents are insufficient, the documents are incorrect, physical verification done, but premises not found correctly. These are the reasons which he will reject it. For extended time, yes, possible. He will see his track record. By the 3 times, he will have seen how much is the GST payment he's making, right? Because when will he apply for extension, Somya, he will apply for extension after 3 months or 3 months tak, he will have a in the 3 months he would have filed the return. So basis his returns, the officer will know that yes, these are the sales which is happening. So he can ask for additional advance as well. No response change amendment is for 15 days. Correct. Correct.
ठीक है, नाउ वी आर गुड टू गो फॉर कैंसलेशन। एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स मींस, निधि जी हमने यहाँ पे देखा था ना कि जब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करते हैं तब उनको एडवांस डिपॉजिट देना पड़ेगा ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हम बात कर रहे हैं विच इज एडवांस डिपॉजिट ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। जितना भी टैक्स है उसका एस्टिमेट करके उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो टैक्स बचेगा, जो टैक्स भरना होगा उसे उसको एडवांस में ही पे करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। Sir, if he pays advance after he cannot able to sell those estimated, then so whenever he goes for cancellation, he will get a refund of it. He has to ask for the refund saying that this is what I had thing. Now I'm cancelling my registration, so kindly refund. तो फिर वो refund हो जाएगा। Okay, now this is interesting. First is registration interesting था, and cancellation also is interesting. Like how there is a specific timeline for registration. Similarly, there is a procedure for cancellation of registration. Okay. Now, cancellation of registration, there are three scenarios through which you can cancel it. Okay. So, cancellation, there are three ways. You can cancel it by yourself. You are a taxpayer. You can apply for cancellation. Second is it is cancelled by the authorized tax officer. Officer has some reason and he can cancel your registration. That is the second option. And third is in a case where it is cancelled by the legal heirs in the case of death of a taxable person. So three instances. आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन, आपको लगता है कि आपका टर्नओवर गिर गया है या कुछ और वजह से आपका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट केस कि आपका रजिस्ट्रेशन आप स्वयं कैंसिल कर रहे हो। सेकेंड केस, इट इज कैंसल्ड बाय द ऑथराइज्ड टैक्स ऑफिसर। ऑथराइज्ड टैक्स ऑफिसर के डिसीशन पे उसे लगता है कुछ पॉइंटर्स हैं, वो हर एक केस पे कैंसिल नहीं कर सकता है बिकॉज देर नॉट सच ओपन पावर्स। उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं कि इन व्हाट ऑल इंस्टेंसेस ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। एंड थर्ड इज अ केस ऑफ कैंसिलेशन बाय द लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ टैक्स पेयर। Cancellation by the registered person by his own account or by the department। कब रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिल कर सकता है या फिर डिपार्टमेंट वाला कैंसिल कर सकता है? इन केस देर इज अ बिजनेस डिसकंटिन्यूएंस, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है और इट इज ट्रांसफर्ड फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ अ प्रोपराइटर। बिजनेस खत्म हो गया है, बिजनेस को आपने बंद कर दिया गया है, आपका बिजनेस को आपने ट्रांसफर कर दिया गया है, आपने अमेलगमेशन कर दिया गया, अमेलगमेटेड विद अदर एंटिटी, आपका बिजनेस डीमर्ज हो गया है, या फिर और एनी अदर वाइज डिस्पोज्ड ऑफ, किसी भी वजह से आपने कैंसल क्रिएशन कर दिया, खत्म कर दिया बिजनेस को, इन वजह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। और अदर रीजन इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप, फ्रॉम पार्टनरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी चेंज हुआ है, बिजनेस ओनर सेम है, फिर भी क्या होगा, एक
लाजो एक चीज अपने को याद रखना है कि जब भी पैन चेंज होगा तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेंज होगा। चेंज तो ऑफिसर नहीं कर सकते क्योंकि नया पैन है, तो फिर पुराना पैन का जो भी रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल करके नए पैन पर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आप ये समझ गए ना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, एओपी, ये सब क्या है? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है। किसी भी तरह से आप बिजनेस चला सकते हो। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है तब पैन नंबर चेंज होगा, तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज के लिए ऑप्शन नहीं है, तो पुराना कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। Okay. Third case, where the taxable person who is no longer liable to be registered under Section 22 or 24, or who intends to opt out of voluntary registration. Section 22 और 24 क्या बोलता है कि जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे हमने देखा है फ्यू इंस्टेंसेस की जब कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। नाउ इन दैट केस अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है आपको और आपको जीएसटी लायबिलिटी नहीं आ रही है, राइट, आपका लायबिलिटी था तो इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, और आपको लगता है कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन कुछ फायदे का नहीं है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी फायदा नहीं दे रहा है, और आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के कुछ भी क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। और अनदर रीजन इज व्हेन यू आपने वॉलेंट्रली रजिस्ट्रेशन लिया और आपको बाहर निकलना है, तब भी आप निकल सकते हो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो तब भी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ तब भी कर सकते हैं। Sir, after cancellation, if a person takes new registrations, he need to carry out the procedure to registration which is done earlier. Yes. एक बार कैंसिल हो गया तो पूरा लेना पड़ेगा. Okay. He should do the registration fresh as though he's a new registrant. Now, there are three things we said: cancellation by the taxpayer himself. Second was cancellation by the authorized tax officer. That is, when can the tax officer cancel? There are certain instances which we had discussed. Now, what are those instances of cancellation by proper officer? When he does not conduct business from the declared place of business. Officer गए हैं inspection के लिए और देखा कि जब registration place of registration था वहां से तो business ही नहीं कर रहा है. He's not conducting business from the declared place of business. Issues invoices without supply of goods or services. He is only issuing invoices, but he's not supplying goods. अगर गुड्स सप्लाई करते हैं तभी इनवॉइस इशू करना है, करेक्ट, लेकिन वो सिर्फ इनवॉइस इशू कर रहा है, गुड्स कुछ सप्लाई नहीं हो रहा है, तब भी कैंसिलेशन कर सकते हैं. ही वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171, दैट इज एंटी प्रॉफिटरी. नाउ देयर वाज अ ट्रांजिशन राइट फ्रॉम प्री जीएसटी टू अदर जीएसटी, और क्या हुआ? फायदा हो गया है जी बिजनेसेस को, तो वो जो भी फायदा हुआ है उनको प्रॉफिट वो नहीं रख सकते, उनको कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या होगा? एक सेक्शन है सेक्शन 171 की, आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है जीएसटी की वजह से आपको पास ऑन करना है. अगर आप पास ऑन नहीं करते हो तो यू आर वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 विच इज एंटी प्रॉफिटरी. मतलब जीएसटी वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप वो बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहे हो, सो इफ यू आर वायलेटिंग दैट और एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटीज ने फाइंड आउट कर दिया, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. ठीक है. देन यू वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A.
रूल 10A जो हम आगे देखेंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 30 days या फिर 30 days और विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 यू हैव टू सबमिट योर बैंक अकाउंट। अगर आप वो सबमिट नहीं करते हो तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ऑफिसर। और यू अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, जो सेक्शन 16 के कंडीशंस है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हो लेकिन आईटीसी गपा गप ले रहे हो, तब भी आपका कैंसिल हो सकता है। यू फर्निश डिटेल्स, सो दिस इज अ बेसिक थिंग। लास्ट पॉइंट, देयर आर अदर स्लाइड्स, बट इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है कि यू आर सप्लाइंग and you're declaring more details in GSTR1, but you're paying less taxes in GSTR3B. Now, whatever we declare in GSTR1, that is only outward supply. So, by declaring details in GSTR1, you are not paying any taxes. You're paying taxes only in GSTR3B. So, once you put the details in GSTR1 and not pay taxes in GSTR3B, that's a loss to the government. Why? Because the receiver will get the credit. वंस यू फाइल GSTR1, GSTR2A और 2B में आ जाता है और सामने वाला क्रेडिट क्लेम कर भी लेता है। करेक्ट? सो देयर इज अ लॉस टू द गवर्नमेंट। सो वंस दे फाइंड दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच यू आर रिपोर्टिंग इन GSTR1 बट नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते। देन इफ यू वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ रूल 86B, व्हाट इज 86B सेइंग? दैट हमने देखा है ना आईटीसी में दैट यू हैव डिस्चार्ज मोर टैक्स from your electronic credit ledger. मतलब 1% you should have paid through cash, but you have utilized 100% credit. Even then, you can get your registration cancelled by the officer. You violate the provisions of Rule 23(1), that is third or fourth proviso you are violating. Now, what is this 23(1) proviso? It says that if you are doing, I'll just tell you what is this 23rd proviso that we have discussed in the past. Then any person paying tax under composition scheme and failed to furnish returns for a period of 3 months. So if you have filed your returns regularly, fine. Now, composition dealer will pay returns how often? We have discussed this, right? How often does a composition taxpayer uh, file the returns? Does he file monthly? Does he file quarterly? Or does he file at any other time? Correct. Section 171 is out for syllabus, but point for cancellation में वो तो एक point है ना, quarterly, monthly, annually. Correct. So a composition taxpayer files the return annually, not monthly, not quarterly. ठीक है? अगर एक क्वार्टरली कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का ईयरली फाइलिंग है और एक साल का रिटर्न उसने डिले कर दिया है, पहले ही मंथली और क्वार्टरली से बच के वो आपको ईयरली फाइलिंग करने के लिए देते हैं और इसको भी आप टाइम पे नहीं करते हो। कितना टाइम? ठीक है, डिले हो गया, आप 3 महीना डिले कीजिए, उससे भी ज्यादा डिले हो गया तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। Correct? So, if you're filing GSTR returns for a financial year beyond 3 months, even then you're liable for cancellation. And if you're a regular taxpayer and you've not filed the return for 6 months, if you're a monthly taxpayer, or 2 quarters, if you're a quarterly filer. Matlab, if 2 quarters would mean 6 months period. So either direct 6 months or 2 quarters if you're not filing, then also you are liable for cancellation. Then if you're voluntary registered, okay, you are not under compulsory registration, you are coming under voluntary registration and you are not commenced business within 6 months from the date of registration, then also you are liable for cancellation. And the last thing is,
if your registration was obtained by way of any fraud, willful misstatement or suppression of facts. आपने proofs गलत submit किए हो, right? आपने fraudulently registration ले लिया हो. In all that cases, you are liable for cancellation. Point number two, okay. Point number two is when you issue invoice without supply of goods, right? आपने supply किया है invoice को और goods को आपने supply ही नहीं किया है, then also you're liable for cancellation. Second slide point two, ठीक है. वायलेट्स प्रोविजंस ऑफ रूल 23 थर्ड एंड प्रोविजन. रूल 23 बोलता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, ठीक है, उसको आप रिवोक कर सकते हो. यू हैव टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन एंड दे विल रिवोक इट, सेइंग दैट ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन ऑल्सो यू आर कमिंग अप एंड सेइंग दैट वी विल कंटिन्यू योर बिजनेस, ठीक है, यू आई विल गिव यू द अप्रूवल, बट वॉट एवर इज योर ओल्ड रिटर्न्स ड्यूज दैट यू हैव टू फाइल इट. विद दैट कंडीशन दे हैव गिवन द रजिस्ट्रेशन. फिर भी आप रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो, दैट इज द थर्ड प्रोविजो. एंड फोर्थ प्रोविजो इज वेर योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड एंड देर ऑल्सो विद इन 30 days यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स. ओके, अगर इफेक्टिव डेट आज से है तो फिर आज से रिटर्न, दैट इज थर्ड प्रोविजो. फोर्थ प्रोविजो सेइंग अगर पुराने डेट से कैंसिलेशन हुआ है तो पुराने डेट का भी आपको रजिस्ट्रेशन, जो भी रिटर्न्स फाइल नहीं किया वो फाइल करना पड़ेगा. सो इन केस रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड and still you do not file your returns, then also again officer can cancel your registration. Composition point. Somya, composition point is very simple, that composition taxpayer gets a time for filing returns on an annual basis. Now, if he is not filed the return on time, fine, no problem, interest रहेगा, but he should not delay the filing beyond 3 months. If it delays beyond 3 months, then also his registration is liable for cancellation. Correct. Generally, fake invoices will be issued to claim ITC in fraudulent manner. Correct. That is why their registration will get cancelled. Yeah. Any more questions? Okay. We'll take a break over here and we'll catch again as usual in 10 minutes time and continue on other topics on registration.
Yes, so there are some queries. One is 86B. Anubhav, what is your doubt on 86B? And Nidhi, what is your doubt? First point in this slide, correct. So you are aware of this rule 86B, right? So if you're aware, only then you will understand this. So this is all interconnected, right? In our input tax credit, we had said that the ITC will be restricted, right? Generally, input tax credit means that any credit which is available and you can utilize for payment of output tax. But 86B places a restriction which says that if your turnover in the month is more than 50 lakh rupees, then you cannot utilize your full ITC. You have to utilize only 99% of the ITC. 100% ITC will not be available. 99% will be available and 1% has to be paid through cash. Okay. So 99% of the credit can be utilized and 1% you have to pay through cash. That is what is 86B. And if you are restricted, then, right, then you will be able to fine it. But if you have utilized 100%, that's a violation. So your registration can get cancelled. So composition dealers have to pay tax quarterly, but filing of return is done annually. Correct, Sangeetwani, you're right. प्रॉपर ऑफिसर डाउट, क्या डाउट है? अनम्यूट कर सकते हो आप? सर ये जो वायलेट सेकंड वाला जो है, फोर्थ प्रोविजो रूल 23rd वाला, वो मतलब मॉड्यूल में रिलेट भी नहीं हो रहा सर और क्लियर भी नहीं हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं. बताते हैं आपको मॉड्यूल से भी. ओके सर. कैंसलेशन 9.65. यस सर, ओपन है सर. बताता हूँ मैं आपको. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट where a registered person has contravened such provisions of the act or rules thereunder are as may be prescribed. Correct? तो यस इसमें पावर दिया गया है ऑफिसर को कि या लॉ मेकर्स ने, जो जिसने जीएसटी एक्ट बनाया है, उन्होंने कह दिया है कि कुछ प्रोविजंस अगर वायलेट करते हैं तो फिर जी उनका सर. रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा. ठीक है, ये सेक्शन वॉलेट बोलता है. वॉलेट मीन्स मतलब सर. अब इसका पावर यूज किया है नोटिफिकेशन. अच्छा, ओके सर. हाँ, a registered person has contravened such provisions of the act or rules made thereunder as may be prescribed. मतलब अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ एक्ट या रूल्स के प्रोविजंस कॉन्ट्रवीन कर दिए, मतलब एक्ट में जो दिया है उससे फॉलो नहीं किया है. ओके सर. ठीक है, तो कानून भी को तोड़ उसका दिया है रजिस्ट्रेशन या कैंसिल रूल्स को हो तोड़ दिया जाएगा. है, तब. करेक्ट.
तो कौन से रूल्स है, कौन से एक्ट है, उसे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। ओके ठीक सर। है, उसे आप देखिए, नीचे दिया गया है। हम्म, इधर बताता हूं मैं आपको एग्जैक्टली आपके इसमें रूल 21 में दिए गए हैं, जो है आपके पेज नंबर 69 और 70 में। 9.69 और 9.70। प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन सर, वो क्या स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसी को। उसके नीचे जो रूल मैं आपको शेयर 21 prescribed contraventions कर which make a registered person liable to cancellation of registration, rule 21 यही है सर। करें। तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा है सेक्शन में, उसको सेक्शन में दिया गया है और रूल में विस्तार से दिया गया है। सेक्शन में सिर्फ ये दिया गया है कि कौन से, अगर आप किसी एक्ट या रूल्स के प्रोविजंस कॉन्ट्रवीन करते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। करेक्ट, यही जी पढ़ा सर। था हमने। यस सर। लेकिन उसको विस्तार में इसीलिए रूल्स में दिया गया है क्योंकि एक्ट में सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए जीएसटी ओके। एक्ट है और फिर उसका रूल्स भी है। सीजीएसटी एक्ट है, फिर सीजीएसटी रूल्स है। एसजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी रूल्स भी है। ओके सर। ठीक है, रूल्स में कैंसिलेशन का दिया भी गया है कि जीएसटी। अगर अच्छा। डन सर। you do not conduct business from the declared place, you issue invoice in violation of provisions, violates the provisions, violates, यहाँ पे जी ए देखिए, ये नया एडिशन है। violates the provision और थर्ड और फोर्थ प्रोविजन, पहले ये नहीं था, अभी इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। I will include tax credit in a violation of the provision of section 16. उसके बाद Furnish the detail of फिर outward दिख रहा है supplies आपको, from GST. Yes sir. हाँ सर दिख रहा है। जी नंबर स्क्रीन, वाला। ये वाला पॉइंट। हाँ, जी ए, जी के बाद जी ए, मतलब पहले जी था, फिर हाँ। इसको ऐड किया गया है। Violate the provisions of तो ये third और जरूरी है fourth। क्योंकि कुछ भी अमेंडमेंट हुआ है। करेक्ट। जी तो कुछ भी सर। अमेंडमेंट करते हैं तो जनरली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये भी टेस्ट करेगा कि आपने नए प्रोविजंस पढ़े हैं या नहीं। ओके सर। जी जोर है। ठीक है? ओके, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस व्हाट, फॉर रीजन ऑफ व्हाट, सो आई हैव कंसोलिडेटेड ऑल द रीजन फॉर कैंसलेशन एंड पुट इट एट वन प्लेस. So these are the reason why registration can be cancelled. Now, before cancellation, he cannot directly go for cancellation. Officer will have to suspend it, because to take the decision of cancellation, he has to check whether there is any past liability and other things. That's why what they will do is they will suspend the registration, and during the suspension, they will check a lot of things, and if they are satisfied, then they will cancel it. So what is a suspension? When an application is made for cancellation of registration, whether by the tax payable or department, it takes time. So during this period, proper officer may suspend your registration. During suspension, what will happen and what period the suspension will be there? If you have applied for cancellation, then from the date of the submission of application or from a previous date. So in your cancellation, like how in registration we can register from a prior date, that is from the date when you are liable, when there is a
registration under section 22, you have to mention the date from where you're liable for. Similarly, in your cancellation also, you can mention the date of submission, either from the date of your actual submission of application or the date of your application, or you have an option to mention a earlier date, saying you want to apply for cancellation from a prior date. Whichever is later, from that date, your suspension will start till the completion of cancellation. So you can have from a previous date or from a future date. If you're applying for a future date, till that date, you can do the GST business. After that, you can not stop it. So that is the way it is, whichever is later. Till the date of completion of cancellation, you will be under the status of suspension. सेकेंड पॉइंट इन हिंदी, हाँ हाँ तेज प्रकाश, कि अगर आप सस्पेंशन के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आप जब से अप्लाई करते हो या फिर आगे के डेट से, आज क्या डेट है, 29th है ना, आज 29th मई, तो अगर आप आज अप्लाई करते हो आप 29th का डेट डाल सकते हो या फिर आगे का डेट जैसे 5 जून को भी डाल सकते हो। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ है जिसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, उसके बाद नहीं चाहिए तो आप आज का डेट या फ्यूचर डेट डाल सकते हो। सस्पेंशन विच एवर इज लेटर डेट से होगा, विच एवर लेटर इज मतलब जो भी लास्ट डेट होगा विच इज 5th जून। तो 5th जून से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। कब तक? टिल कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन। जब तक आपका कैंसिलेशन नहीं होता तब तक आप सस्पेंशन मोड में रहेंगे। ये कब होगा? जब आप अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जब डिपार्टमेंट को कैंसिल करना है, डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट कैंसिलेशन ऑन इट्स ओन अकाउंट। जब डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है तब फ्रॉम द डेट टू बी डिसाइडेड बाय द ऑफिसर, ऑफिसर डिसाइड कर सकता है। ये पिछले डेट का भी ले सकता है कि आप तो 1 महीने से आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो फिर पिछले डेट से पुराने डेट भी जा सकता है वो। ड्यूरिंग सस्पेंशन क्या होगा? ड्यूरिंग सस्पेंशन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। सो सस्पेंशन में आपको सप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन है लेकिन सस्पेंड मोड में है, और इस पीरियड में आपको जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, सस्पेंशन मोड में यू डू नॉट हैव टू डू एनी बिजनेस, यू कैन नॉट सप्लाई और यू डू नॉट हैव टू फाइल योर रिटर्न्स ऑल्सो। सॉर्ट मीन्स कैंसलेशन इज सॉर्ट इज व्हेन यू, आप जब कैंसलेशन के लिए अप्लाई करते हो उसे कहते हैं कैंसलेशन इज सॉर्ट। फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच योर कैंसलेशन इज सॉर्ट, फ्रॉम द डेट जब से आप कैंसलेशन मांग रहे हो उसे कहते हैं कैंसलेशन इज सॉर्ट। ठीक है, हम जब अप्लाई करते हैं तब आज के डेट या फ्यूचर डेट से कर सकते हैं, लेकिन जब ऑफिसर कैंसिल करता है वो पुराने डेट से भी कैंसिल कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ही कैन कैंसिल फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑल्सो। क्लैरिफिकेशन, द एक्सप्रेशन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, उसका मतलब क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है एंड जो भी सप्लाई करेगा उसके ऊपर वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। ओके, इन केस एन ऑर्डर केम फॉर रिवर्सल ऑफ सस्पेंशन, द टैक्स पेयर हैज टू इश्यू रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड फाइल द फर्स्ट रिटर्न। तो सस्पेंड मोड हो गया लेकिन कैंसिलेशन नहीं हुआ और कैंसिलेशन खुल गया है। ठीक है, कि ऑफिसर ने सस्पेंड किया था लेकिन उसको सफिशिएंट प्रूफ दे दिया कि मेरा तो बिजनेस चल रहा है, यू डोंट हैव टू कैंसिल इट। तो फिर वो क्या करेगा? कैंसिलेशन सस्पेंशन रिवोक कर देगा। रिवोक मतलब खोल देगा, सस्पेंशन उठा देगा। फिर जो भी उस पीरियड में आप सेल्स करोगे उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस रेज करोगे, क्योंकि उस वक्त आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकते हो, आप सिर्फ नॉर्मल इनवॉइस दे सकते हो। करेक्ट, टैक्स इनवॉइस मतलब जिसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज करते हो उसे कहते हैं टैक्स इनवॉइस। और सस्पेंशन पीरियड में कंडीशन है कि आप कुछ भी टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हो। सो यू आर नॉट गिविंग टैक्स इनवॉइस, यू आर गिविंग कमर्शियल इनवॉइस। उसको आप रिवाइज करके टैक्स इनवॉइस दे दोगे अगर आपका सस्पेंशन उड़ जाएगा। एंड यू हैव टू फाइल द फर्स्ट रिटर्न जिसमें ये सभी सेल्स उसमें आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। क्लियर? Suspension of GST registration. Proper officer can suspend registration without affording a reasonable opportunity of being heard. Without opportunity दिए भी वो suspend कर सकता है when a comparison of the returns करने पर आपके GSTR 1 में डिटेल्स ज्यादा है GSTR 3B पे,
या फिर आपने इनवर्ड लिया है, आईटीसी क्रेडिट क्लेम किया मोर देन व्हाट इज देयर इन योर जीएसटीआर 2A, इस केस में विदाउट आस्किंग, जनरली क्या होता है, कुछ भी प्रोसीजर करना है तो ऑफिसर को आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। हर एक लॉ में ये मेंशन किया गया है कि अगर कुछ चीज आपके खिलाफ, आपकी सख्त कार्रवाई की जाती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एटलीस्ट टैक्सेशन लॉ में। तो हर चीज के लिए एक शोकॉज नोटिस देते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन इन दो केसेस में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके रिटर्न्स में क्लियरली दिख रहा है कि आप जीएसटी प्रोविजंस वायलेट कर रहे हो, आप जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखा रहे हो, टैक्स पे कम कर रहे हो, आप फेक इनवॉइस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो फिर आपको बिना नोटिस के आपके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा। करेक्ट, ड्यूरिंग सस्पेंशन नो जीएसटी फाइलिंग और पेमेंट। Sir, if officer suspends retrospectively, but supplier has issued tax invoice, then what will happen? Then he has to pay the tax because he will be treated as a person who is not registered. If a person is unregistered and if he collects any taxes, then he has to pay. So he has to pay the taxes, whatever he's collected. He should not collect, but if he's collected, he has to pay. Right? So in these two cases, a right of opportunity, affording a reasonable hearing, a reasonable opportunity will not be given. Even in income tax, even in company law, if any action is proposed to be taken against you, they have to give you an opportunity of being heard. They have to hear you. That is called as principle of natural justice. Okay. Principle of natural justice says that if any action is taken against any person which is against him, then you have to afford a reasonable opportunity. A registered person whose registration has been suspended shall not be granted any refund during the period of suspension. ऐसा नहीं है कि सस्पेंड हो गया और वो रिफंड अप्लाई करेगा मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। And a suspension of registration shall be deemed to be revoked upon the completion of cancellation proceedings. कि अगर कैंसलेशन शुरू हो गया या फिर सस्पेंशन रिवोक उठा गया है, तब आपका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। What is the procedure for cancellation? Voluntary cancellation. अगर आपको before that there's a question. Sir, if officer suspends retrospectively, but supplier has issued tax invoice. Yeah, this we have discussed. If you're applying for voluntary cancellation, then what is the procedure? You have to apply supplement where you feel that your turnover has gone down and you're no more continuing the business. Within 30 days, your business stops, you apply for cancellation. Furnish details of inputs held in stocks. कि आप ऑफिसर तो कैंसिल नहीं कर रहा, आप कैंसिल कर रहे हो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कैंसिलेशन, देन आपको स्टॉक के डिटेल्स देने पड़ेंगे। कुछ स्टॉक नहीं है तो फिर आपको जीरो स्टॉक डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यू हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन कि आपके स्टॉक कितने, अगर जीरो है तो भी डिक्लेयर देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो है ये कैसे पता चलेगा? वंस यू फाइल योर रिटर्न्स। जैसे आप इनकम टैक्स में आपका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, फिर इवन देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न सो दैट द ऑफिसर इज अवेयर ऑफ इट। तो इसी तरह if you have zero stock, still you have to give a declaration, or if you have some stock, you still have to give a declaration. And the proper officer will pass an order. Why you have to give stock details? क्योंकि इन स्टॉक के ऊपर आपने जो क्रेडिट लिया है और आज सेल नहीं कर रहे हो, तो द क्रेडिट बेनिफिट व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू, उसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन वॉट एवर इज द स्टॉक, ऑल द स्टॉक्स, stock of raw materials, semi-finished goods, finished goods, and capital goods. All of this, you have to give the detail and calculate the ITC on this and reverse it. And the officer will pass an order within 30 days. And if it is suo moto cancellation, voluntary cancellation, जब मैं cancellation apply करता हूं उसे कहते हैं voluntary cancellation, and suo moto cancellation is when the officer cancels it. जब ऑफिसर कैंसिल करता है उसे कहते हैं सो मोटो कैंसलेशन। ये कोई चाइनीज या जापानीज वर्ड नहीं है, इट्स अ नॉर्मल वर्ड। जब भी मैं सो मोटो हुआ, फर्स्ट मैंने सुना था, ये मेरे को समझ में आया कि ये क्या है सो मोटो, मुझे लगा कि कोई जापानीज वर्ड है। इट इज अ नॉर्मल वर्ड। जब ऑफिसर कुछ एक्शन लेता है उसे कहते हैं सो मोटो कैंसलेशन।
सो इन सो मोटो कैंसिलेशन ऑफिसर विल इश्यू अ शो कॉज नोटिस, क्योंकि वो कैंसिल के लिए अप्लाई कर रहा है। जैसे हमने कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो मुझे अपॉर्चुनिटी थी दो। तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोसीजर है कि उसे एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। देन रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू रिप्लाई विद इन 7 डेज। आपको क्यों कैंसलेशन नहीं करना चाहिए उसके लिए आपको रिप्लाई करने का पड़ेगा 7 दिन के अंदर। एंड इफ रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री तो फिर वो कैंसलेशन ड्रॉप कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर 30 दिन के अंदर कैंसलेशन ऑर्डर पास करेगी। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन फ्रॉम अ डेट विच इज डिटरमाइंड बाय द ऑफिसर। अगर वो कैंसिल कर रहा है तो फिर डेट भी वो ही डिसाइड करेगा। इन कैंसलेशन सो मोटो समझ में आ गया निधि? अमाउंट पेएबल ऑन कैंसलेशन, जो हम स्टॉक का डिटेल्स देते हैं। Yes, today is the last class on registration. So we'll cover this, and if time permits, we'll take up some questions also on cancellation. Amount payable on cancellation will be कि आप स्टॉक का डिटेल्स देते हो। सो एनी आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ITC calculated in accordance with the rule 44 of the CGST rules, which is not applicable to you, but you have to do a comparison कि जो भी ITC आपने क्लेम किया है या फिर ITC on inputs computed proportionately on the basis of corresponding invoices। तो जो भी आईटीसी आपने क्लेम किया है, जैसे हमने कहा कि 5% पर क्वार्टर, उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। या फिर आईटीसी जो लिया है विच एवर इज हायर, या तो फिर इनपुट टैक्स या फिर आउटपुट टैक्स पेएबल, इन दोनों का कंपैरिजन करके विच एवर इज हायर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो विच एवर इज द इनपुट्स यू हैव क्लेम्ड आर द जीएसटी पेएबल ऑन योर आउटपुट टैक्स, विच एवर इज हायर यू विल पे द जीएसटी ऑन योर इनपुट्स। देन ऑन कैपिटल गुड्स आपको सेम करना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल गुड्स सिंस यू हैव यूटिलाइज फॉर पार्ट पीरियड, वट एवर पीरियड यू हैव यूज, 5% पर क्वार्टर कम करके बैलेंस आईटीसी और द आउटपुट टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए हो? आईटीसी ऑन इनपुट्स और आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स यू हैव टू डू अ कंपैरिजन। He that is ITC on inputs, that is ITC computed on the basis of corresponding invoices which has been availed, or output tax payable, whichever is higher आपको पे करना पड़ेगा। So I was part in a future retail limited company liquidation team, and our head of team asked me to get a casual taxable person registration for selling goods of future retail limited under auction. I have done everything perfectly. Still, GST officer has demanded 15,000. Oh God. Okay. Yeah, these things happen at the ground level, Anil. But you can tell that you are from future retail and you don't pay it. So probably that should work. करेक्ट, दोनों में वही है, विच एवर इज हायर वी विल पे, राइट। शो कॉज नोटिस कैसा होता है? आई विल शो यू अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन, राइट? आई विल जस्ट शो यू दैट।
Yeah. This is how the show cause notice appears. Form GST REG 17. This will be the reference number, उनका internal computer generated reference number, date, latest ही है 12th मार्च का, to the registration number, रमेश कुमार, उसका address वगैरह. Show cause notice. This will be how the show cause notice will appear. Show cause notice for cancellation of registration. जहाँ पे reasoning दिया जाएगा saying that why I want to cancel. So officer is giving a reason that whereas on the basis of the information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled. That you are a person who are not conducting any business from the declared place of business because rule 21A में आता है. 21E आता है कि person you are availing ITC in violation of provisions of 16. So now you have been directed to furnish a reply कि क्या रिप्लाई करना चाहिए कि इफ यू मुझे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है तो फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि क्यों मुझे कैंसिल नहीं करना चाहिए, वरना मैं तो करने के लिए तैयार हूं. सो दैट इज हाउ द शो कॉज नोटिस अपीयर्स. और डेट देंगे, उस डेट तक आपको रिप्लाई करना है. और डेट ऑफ सस्पेंशन, ये शो कॉज नोटिस दे रहा है उसमें ही लिख दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी सस्पेंशन मोड में है. Whichever is higher, we have to calculate here. So they will give you what is the value as per rule 44 and what is the output value. So on that output value, you can calculate the tax and compare whichever is higher. Ex parte means without the party appearing. So if you do not appear, I will take the action without your appearance. That is called ex parte. I'm giving you an opportunity, come and present. So if you don't present, I cannot hold my proceedings like that. So I will decide the case without your presence, without the party being present. That is called as ex parte order. रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन का कोई ऑफिस भी होता है? हाँ, जीएसटी ऑफिसर्स अलग से होते हैं. हर एक स्टेट में रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में मल्टीपल ऑफिसर्स होते हैं. तो हर एक स्टेट में जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं. नाउ अगर आपका सस्पेंशन भी चला गया है, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है और कैंसिलेशन भी हो गया है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसे कहते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. मतलब आपका कैंसिलेशन हो गया है, फिर भी आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपने जो कैंसिलेशन किया है ना सर, उसे भी आप खोल दीजिए. दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, वेर इन आपके कैंसिलेशन के 90 डेज तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो ऑफिसर्स या जीएसटी लॉ क्या चाहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो, तो इसीलिए वो आपको इतना सारा टाइम देते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, फिर सस्पेंशन किया, फिर कैंसिलेशन भी किया, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए. विद इन 90 डेज आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका डिले होता है फिर आपको और 90 डेज मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए? ये एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर, वो लेवल तक जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके पास पावर है 90 दिन के बाद और 90 दिन मिला दो, टोटली कैंसिलेशन से 180 दिन तक भी आप रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हो. इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ही मे रिवोक द कैंसिलेशन विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. आपने 90वें दिन में दिया, ऑफिसर को 30 दिन के अंदर डिसाइड करना है. अगर वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है मैंने कैंसिलेशन जो किया तब आप नहीं आए थे लेकिन आप अभी वैलिड रीजंस दे रहे हो, तो फिर वो कैंसिलेशन खोल सकता है. तो फिर कैंसिलेशन से आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन दोबारा आ जाएगा. इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड तो फिर उसे
कैंसिल करना पड़ेगा. ही विल से दैट नो आई डू नॉट एक्सेप्ट इट. उसके लिए भी उसे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा. आपको बुलाएगा. ही विल आस्क यू व्हाई इज द रीजन शुड आई शुड नॉट encourage your revocation. एंड आपको 7 दिन के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा. और उसको फिर 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. ओके. अगर वो ओपन कर देता है, ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इवन आफ्टर कैंसिलेशन यू आर गेटिंग अनदर लाइफ लाइन थ्रू रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. 90 days by the same officer and plus 90 days by the higher authorities. Higher authorities will be additional commissioner, joint commissioner or commissioner. अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया उसकी वजह से कैंसिल हुआ है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज इफ यू हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स एंड ही कैंसल्ड इट, तो फिर ही विल टेल यू टू फर्निश द रिटर्न्स. नाउ व्हाट विल यू फर्निश द रिटर्न्स फॉर द पीरियड? दिस इज दैट थर्ड प्रोविजो एंड फोर्थ प्रोविजो ऑफ रूल 23. दिस इज थर्ड प्रोविजो विच सेज दैट, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, दैट आपका रिटर्न जो है, डेट फ्रॉम विच योर रिटर्न्स आर नॉट फर्निश्ड इज दिस डेट, एंड returns for this period from the date when you have not filed the return, you have got an order for cancellation. So, and in the cancellation, the officer has mentioned this is the effective date of cancellation. So, if this is the effective date of cancellation and you have not filed the returns for this period, then within 30 days from this date, you have to file your returns. Okay. Returns for this period to be filed within 30 days of order of cancellation. So, you have filed the returns for this period, but from the cancellation date till the date of revocation of cancellation, you have not filed the returns. So, you have to file it here. And in the next instance is your effective date is retrospective. That from the date when you have not filed the return, you have got a cancellation order. So in that case, for this duration, you have to file it. That is what third proviso is the previous slide and fourth proviso is this side. From the date when you have not filed the returns, if this duration you would have filed the returns, then you don't have to file this again. But if you have not filed for this period, from that period till the date of order of revocation, you have to file your returns. SCN का मतलब शो कॉज नोटिस. रिवोक के बाद पुराना रजिस्ट्रेशन रहेगा कि नहीं? अगर रिवोक कर दिया तो पुराना रजिस्ट्रेशन और पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिव हो जाएगा. करेक्ट. जो भी मंथ्स के रिटर्न्स आपने फाइल नहीं किए वो सब फाइल करने पड़ेंगे. सो वॉट एवर इज द ड्यूरेशन वेयर यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न्स, वो सब को फाइल करना. यहां तक आपने फाइल कर दिया, फाइन, लेकिन आपका कैंसिलेशन हो रहा है इस दिन से, तो उस दिन से जब तक रिवोक हो गया है तब तक आपको रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा. नाउ रिवोकेशन हर कोई नहीं कर सकता है. हर कोई कर सकता है लेकिन थोड़े लोग नहीं कर सकते हैं. हु? व्हेन योर रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड वॉलंटरी, आपने ही अप्लाई किया था और आपको मस्ती चढ़ गई कि आप फिर से रिवोक कर रहे हो. कि अगर ऑफिसर ने अप्लाई कैंसिल किया फिर आप नहीं नहीं रोके जाते हो तो समझ में आता. लेकिन आपने ही अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, ऑफिसर ने मान के कैंसिल कर दिया, अभी आप रिवोक कर रहे थे, नहीं, वो परमिटेड नहीं है. अगर आपने स्वयं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया तो फिर आप नहीं जा सकते हो रिवोकेशन के लिए. यूआईएन होल्डर्स भी कैंसिलेशन को रिवोक नहीं करवा सकते क्योंकि देर ऑल उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, तो वो नहीं जा सकते. जीएसटी प्रैक्टिशनर वो भी कैंसिलेशन नहीं कर सकता है. व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लीगल हेड, क्योंकि वो मर गया है, गुजर गया है एक आदमी और उसके लीगल हेड ने कैंसिलेशन अप्लाई किया है, वो भी आप उसके रिवोक पॉसिबल नहीं है. एंड कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी शैल बी मीन डीम टू बी कैंसिलेशन अंडर सीजीएसटी. जैसे रजिस्ट्रेशन एक है सबके लिए, वैसे ही अगर आप एसजीएसटी ऑफिसर के पास कैंसिल करते हो तब सीजीएसटी ऑल्सो इज कैंसल.
Who is a GST practitioner? There is an option under GST called as GST practitioners. जब हम returns chapter पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, but I'll explain you briefly that if it's a chartered accountant, company secretary, cost and works accountant, you can become a GST practitioners, and there are other people who are BCom graduates. They should write a special exam, and they will also become GST practitioners. The impact of GST practitioners is that a taxable person can link a GST practitioner and his returns will be filed by the GST practitioner. A refund application can be filed by the GST practitioners. ऐसे some instances are there where instead of a taxpayer doing his act, he will authorize one person to do it. So that person is called as a GST practitioner. Okay, here there is a relevant question on what we had discussed. So we'll discuss here question number 26. The registration of Naman Associates was cancelled by the proper officer by an order dated 1st June for its failure to furnish returns. Okay. The registration was cancelled with effect from 1st June itself. It applied for revocation of cancellation, and the order for this revocation of cancellation is 31st July. June, then end of July. In this case, Naman Associates shall be required to furnish all the returns for the period from 1st June to 31st July within a period of 30 days. With this, from 31st July, 30 days will become 30th August. So for that period, from where he is cancelled till the date of revocation, that period from 1st June to 31st July, he has to file by the 30th August. And then another case of registration, 27th case, the registration of Naman Associates was cancelled by an officer dated 1st June for its failure to furnish returns. The registration was cancelled with effect from 1st January itself. Order is dated 1st June, but effective 1st January. It applied for revocation of cancellation, and the order for revocation was passed on 31st July. In this case, Naman Associates shall be required to furnish all the returns for the period from 1st January till the within a period of 30 days, that is 30th, 31st July. Say 30 days makes it 30th August. Okay, so it has not filed from 1st January, so it will have to file from 1st January. In the previous 26th case, it was from 1st June. So from 1st June to July, he will file the returns. Prospective date in this example, yes. In the second case, it is retrospective, that he is cancelling from 1st June, but with effect from 1st January. Matlab, today you are sitting and doing action for the backdated. That is the meaning of retrospective cancellation. That is a good example for retrospective cancellation. Okay. Uh, we'll take up some questions and we'll see how we have understood the concept of registration. I have to increase the font size. What is the validity of the registration granted under GST?
Check very easy questions. Correct. It is permanent. The registration is permanent, not a temporary one. This is the correct answer. Second, what is the validity period of registration certificate issued to a casual taxable person and non-resident taxable person? Right. It is confusing whether it is 1 or 4. The correct option is 4 because the difference between 1 and 4 is it is temporary for 90 days and extendable for a further period not exceeding 90 days on filing an application without any approvals. Fourth one says, of course, it is temporary for 90 days and extendable by a further period not exceeding 90 days by the proper officer. That makes the difference that yes, it is extendable by the approval of the proper officers. So, point number 4, option number 4 is the correct answer. What basic principle should an officer follow during suspension of registration?
Right. So the correct answer is one. That is, the proper officer can suspend the registration. So for cancellation, he has to give a show cause notice and other thing. For suspension, he can suspend the registration without affording a reasonable opportunity of being heard. This is very important. So that is the distinction in terms of cancellation and suspension. Cancellation, show cause notice is required. For suspension, show cause notice or principles of natural justice is not required for suspension because it is not completely cancelled. Okay, that is a distinction that cancellation के लिए principles of natural justice and opportunity of being heard is required. For suspension, that is not required. We'll skip this question number 4 and we'll take up a practical question so that we can understand this in detail. Prakriti Enterprises. Prakriti Enterprises is a sole proprietorship firm started an air-conditioned restaurant in Indore, Madhya Pradesh in the month of January, wherein the customers are served with cooked food as well as cold drinks, which is non-alcoholic beverages. In February, the firm opened a liquor shop in Dehradun. So we're talking about registration, right? So they have a sole proprietorship, which is in Indore. Now they have opened up a liquor shop in Dehradun for trading of alcoholic liquor for human consumption. Determine whether Prakriti is liable to be registered under the GST with the help of the following information. Okay. Cooked food, what is the sale in Madhya Pradesh for the month of Jan and Feb? Okay. And what is the value of alcoholic liquor for consumption sold in Uttarakhand? Okay. And then interest received from banks on the fixed deposits for the month of January and February. And what is the sale of packaged food supplies for a restaurant in Madhya Pradesh? So with these facts, these values are said that they are excluding GST. Now you have to decide
What is you have to decide? Determine whether Prakriti Enterprises is liable to be registered under GST law or no. So these facts, very small facts, you tell me whether they are liable for registration or no. Golti Anil is saying yes. Nidhi is saying yes. What about others? Not in Uttarakhand, but in Madhya Pradesh, because in Uttarakhand, the enterprise making supply of goods which is not leviable to tax. Okay, that is another viewpoint. So you have to see the complete facts, right? Can't just go with total turnover. Since the total turnover is crossing, first two answers, what I got was yes, liable for registration. But that is not the true answer. Right. We'll just see the answer. You thought sick, sir? I thought alcoholic for human consumption, which is not livable juice, can be considered in aggregate. Yes, it will be considered in aggregate turnover. You're right. But should they register in that state where you're doing only that? Because in one state you're doing only exempt supply. Required to get registration MP, not in Uttarakhand. Correct. So let us see the answer here. Computation of aggregate turnover, right?
Serving of cooked food and cold drinks, non-alcoholic beverage in the restaurant in Madhya Pradesh. In January, it is 6,16,000 and February 7,28,000. So cumulatively, it is 13,44,000 because we'll have to see, right, whether when he should register also. So overall for the year, it is 13,44,000. Add alcoholic liquor for human consumption because aggregate turnover includes total turnover. So alcoholic liquor for human consumption, January there is no sale, February there is a sale, 5,60,000. We'll add that. Interest received from bank, yes, we will add that also because aggregate turnover includes non-taxable supply and exempt supply. 1,20,000, 1,12,000, both the months milake 2,24,000 rupees. And supply of packaged food from restaurant in Madhya Pradesh, right? That is like sale of goods, not restaurant services. It is sale of goods. So 1,68,000 first month and 3,92,000 cumulatively. We have to see cumulatively. So what is the aggregate turnover? Total turnover, which is there, which is total of all these sales, right? For January, it is 8,96,000 and Jan and Feb, by the end of February, it is 25,20,000 rupees. So as per 2 subsection 47, you don't have to write the section, but your reference I've given here. Exempt supply includes non-taxable supply and this alcoholic liquor for human consumption is in Uttarakhand is a non-taxable supply, but includable in aggregate turnover. And this interest, should we add? Yes, it is exempt. Thus, interest received is an exempt supply, but it is includable again in the aggregate turnover. So, since his aggregate turnover is crossing, how much is it crossing? It is not crossing the threshold limit of 40 lakhs, right? Now, so here he is not required to take registration in either of the states. But now you have two things. One is composition scheme and regular scheme. So if he wants to opt for composition, can he go? It is not crossing 1.5 crores. So he can still go for composition scheme if he wants to go in Madhya Pradesh, right? But in Uttarakhand, registration is not required because he's making only non-taxable supplies or he's making only exempt supplies. So if he's making any supplies from a state which is not liable to tax, which is non-taxable supply, registration is not required. So registration will not be required in the state of Uttarakhand. Registration will be required and he has the option of taking a composition scheme registration as well. निधि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया कि उसका टर्नओवर फर्स्ट वो देखेंगे उसका टर्नओवर क्या है सर्विस प्रोवाइड करता है सर्विस के लिए 20 लाख है जो क्यूमुलेटिवली 20 लाख क्रॉस कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा किस में लेना पड़ेगा सिर्फ मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उत्तराखंड में वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा तो हमको मेन यहाँ पे सीखना चाहिए कि सिर्फ हम इंडिविजुअल मंथ्स के टर्नओवर नहीं लेंगे हमको क्यूमुलेटिव टर्नओवर देखना पड़ेगा Correct. So threshold will not decrease to 20 lakhs. You're right. Sir, I have a doubt. Like in composition scheme, a person can register if the turnover is up to 1.5 crores, right? Correct. And in normal scheme, if it exceeds 40 lakh, he has to register. 40 lakhs is for goods, 20 lakhs is for Yes, sir. services. So it will exceed 40 lakh first, then it is up to 1.5 crores. No, so how? I do not understand how he Both will. are separate. Both are separate. One is if you're crossing 20 lakhs, he's providing restaurant services. Restaurant is, we saw in the classification in schedule 2. Serving of food is a provision of services. Yes, sir.
So he's providing restaurant services. So he's not falling under those specified special states where the limit is 10 lakhs or 20 lakhs. He's falling in a general state where his limit, you have to see 20 lakhs for services, 40 lakhs for goods. He is providing restaurant services, so he's crossing 20 lakhs. He has to take registration compulsorily. Correct? Now he has two options. Whether he can go, he has first option to go for normal registration. Second option, he can go for composition scheme. First option, if he goes for normal registration, he will go for normal registration. If he wants to composition scheme, then his turnover should be less than 1.5 crores. He is below 1.5 crores, so he can go for that scheme also. So he has two options. But sir, if in this case, if it exceeds 40 lakh, then he has to compulsorily take in normal scheme, no? Not necessary. If he crosses 40 lakhs also, up to 1.5 crores till he touches the turnover, he still has two options. So then there will not Okay. be any relevance of that 1.5 crores. So everybody Yes. will go for normal only. So whom is that for But 1.5 crores? So 1.45 crores is for everybody who's crossing 40 lakhs also. sir, then uh, okay, so yes, sir, I understood. Like because normal scheme has more benefits than composition. Matlab, we can take ITC. That's why it's like that. Correct. Correct. Turnover within a year? Yes. Turnover within a year. Sure. Any more doubts? So I have prepared few more questions, but due to lack of time, what I'll do is upload the question and answers. You can go through it and you can let me know if you have any questions in the next class then. But apart from the question answers, if you have any other questions in the registration part, okay. So if there are no questions, you can revise the chapter. I will share you these questions. Please go through it. And if there's any questions, as usual, we'll take up the question and then go to the next chapter. Okay. Thank you very much. So registration chapter we have concluded and we'll continue the next chapter from the next session. Yes, sir. Yes, sir.